So today we are going to see new chapter from your pharmaceutical analysis. Introduction to spectroscopic technique. We have seen the UV visible spectroscopy, colorimetry. We have also seen infrared spectroscopy. We have also seen the NMR spectroscopy. In the UV spectroscopy, it is a kind of spectroscopy that is known as electronic excitation spectroscopy. क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुका है. They will ask question like this. In one column they will give you different kind of spectroscopic technique. In one column they will give you the basic excitation involved, and they will ask you to identify the correct match. So remember, in the UV spectroscopy there is electronic excitation. So electronic excitation, that's why UV is known as a electronic excitation spectroscopy. Now in case of IR spectroscopy, there is a changes in the vibrational movement of molecule. Vibrational and rotational changes are there. IR spectroscopy is known as a vibrational and rotational spectroscopy, particularly vibrational spectroscopy. NMR spectroscopy is known as a NMR spectroscopy is known as a spin change. There is a change in the spin at a molecular level. So molecular spin change is there. So, and again in the mass spectroscopy that today we are going to see. In the mass spectroscopy, as the name indicate, mass means what? Mass means molecular weight. Mass means what? Mass means molecular weight. So this spectroscopic technique will give you information about the molecular mass of your compound. If you want to measure the molecular weight of your compound, so this spectroscopy technique is used. So this will give information regarding the molecular mass of your compound under analysis. So what is mass spectroscopy? It is a technique in which compound under investigation, okay, whatever sample is there, that sample is bombarded with the electronic beam, high velocity electronic beam. So first, mass spectroscopy. So in this technique, the compound or the analyte under investigation is bombarded with a high velocity of electrons. So electron velocity, electrons क्या होते हैं कि they are produced by heating the filament. जैसे आपका कोई भी एक आधा मेटल है, मेटल को हीट करेंगे, जैसे आपका ये होता है टंगस्टन या फिर कोई भी मेटल जैसे tungsten filament, mercury. Okay, so if that is heated by electricity, that will emit electrons, and that high electron beams are bombarded on your sample. So sample के ऊपर electron का beam pass किया जाता है. So what will happen? Okay, so resultant compound, that is maybe either organic or inorganic. जो भी आपका compound है, organic, inorganic. So because of the bombardment of electrons, high velocity electrons, so these electron beams bombardment result in the production of different fragments of compound. So आपका जो compound है उसमें fragments मिलेंगे, टूट जाएगा वो compound. आपका एक linear compound है, मान लीजिए कोई isopropyl alcohol है, ठीक है, isopropyl alcohol CH3 CH2 CH3OH isopropyl alcohol. तो आप इसमें CH3 मान लीजिए, मिथाइल का molecular weight कितना होता है? Anybody? कितना है molecular weight मिथाइल का? कितना है? What is the molecular weight of methyl? मिथाइल ग्रुप CH3, सिंपल. CH3 का कितना मॉलिक्यूलर वेट है? एनीबॉडी? ठीक है, C मतलब कार्बन, कार्बन कितना होता है? 12, एंड H कितना है? 3 है. CH3, H का कितना है? 1. सो 12 प्लस 3 कितना होगा? 15. सो मिथाइल ग्रुप हैज अ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 15. ये तो सिंपल होता है, ठीक है. सो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कितना होगा मॉलिक्यूलर वेट? सो यू हैव टू कैलकुलेट. CH3 15, CH2 कितना हो गया? 14, CH2 14, CH2 15 15 14 प्लस OH का ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, मतलब वो 17. 17 प्लस 30 प्लस 14, कैलकुलेट करो. 17 प्लस 13 प्लस 14, 17 प्लस 30 प्लस 14, 15 15 टू टाइम्स CH3 एक CH2 का 14 एंड OH का 17. So you have to calculate. So that will be the molecular weight of your isopropyl alcohol. Okay. What happens in this technique? Your compound under investigation or compound under analysis, so that is bombarded with a high velocity electron beam. Resultant compound may be either organic or inorganic. Because of the bombardment of electrons, so that compound will be broken down into different fragments. And the fragments, okay, the broken down into different fragments. You can say it is a fragment or it is a charged particle, which are then accelerated and separated according to their molecular weight, mass to charge ratio, according to their molecular weight. सो फर्स्ट क्या करना है कि आपका जो भी कंपाउंड है उसको हाई इलेक्ट्रॉन बीम का इम्पैक्ट करना है, उसके ऊपर पास करना है. तो क्या होगा कि बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, जैसे मान लीजिए कि आपका ये मॉलिक्यूल है, कौन सा? दिस इज योर मॉलिक्यूल और दिस इज योर कंपाउंड. ओके,
So if you pass a electron beam, high electron beam, what will happen? So there is a production of charge. So ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? It will extract one more electron from this compound. ये जो मेन कंपाउंड है आपका M, so जो मॉलिक्यूल है आपका, so उसके ऊपर अगर आपने इलेक्ट्रॉन पास किया है हाई इलेक्ट्रॉन बीम, so this electron will extract one electron, your compound will be get charged. आपके कंपाउंड के ऊपर प्लस चार्ज आएगा एंड बाकी जो दो इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है वो. So if you pass a electron beam on a organic compound or in any inorganic compound, what will happen? There is a production of charged particle, positive ion. This is known as a M plus ion is known as a positive ion. This is known as a positive ion. After passing the electron, your compound will get charged or your compound will have a positive charge. This is known as a one fragment. After passing more electron voltage electron beam, so that compound will be broken down sequentially. So this technique is nothing but the passing of electron beam on your compound. That resultant compound will be broken down into different fragments or resultant compound will be have a positive charge. Now this charged compound is deflected, that is accelerated. ये इसको घुमाया जाता है. Accelerated मतलब उसका एक velocity बन जाता है. That is accelerated in the electric field as well as magnetic field. Charged particle is separated according to their molecular weight. So this charged particle, आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके ऊपर अगर हाई इलेक्ट्रॉन बीम अगर इलेक्ट्रॉन पास करेंगे, so what will happen? This compound will get positive charge because of the extraction of one electron from this molecule. Okay, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है आपका उसमें अगर इलेक्ट्रॉन पास करेंगे हाई बीम इलेक्ट्रॉन, so वो एक्सट्रैक्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन and your compound will get positively charged. ठीक है, now this is known as a positive ion fragment. Now if you pass more strength or more electron strength having more electric field, so obviously this compound will again get, ये compound के ऊपर अगर आपने फिर से भी इलेक्ट्रॉन बीम पास किया तो और भी एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, सो उसमें आएगा M प्लस प्लस. सो दैट मीन्स आफ्टर पासिंग ए हाई बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द compound the electron from that compound is extracted and compound gets positively charged. Okay, and these positively charged compounds, they are separated according to their mass and charge ratio, mass to charge ratio. Okay, so this is a technique in which compound under investigation is bombarded with a high velocity electron and resultant compound that may be either organic or inorganic. Because of the bombardment of the electrons, that result into fragments or charged particles which are then accelerated and separated according to their mass, that is molecular weight. This is the technique. Okay, that is known as a mass spectroscopy. So in simple way, this mass spectroscopy will give you idea about the molecular weight of your compound. So therefore mass spectroscopy will give you information, will give you idea about the molecular weight of compound under investigation. So in this technique you can measure the molecular weight or molecular mass as high as 4000 Dalton. So basically this spectroscopic technique, that is mass spectroscopy, deals with the measurement of molecular mass of your mass होता है, ठीक है, वो measure करेंगे आप इसमें. So this पहले you should be clear what information you are going to get in the UV. अगर suppose आपने UV analysis किया है किस compound का, so what kind of information you are getting? UV spectroscopy will give you the information regarding the conjugation present in the compound, double bonds present in the compound. Okay, now if you analyze that by infrared spectroscopy, so IR spectroscopy will give you information regarding the functional groups present in the compound. Okay, now if you analyze the NMR spectroscopy of that compound, so NMR spectroscopy will give you idea about the number of types of different protons, okay, number of hydrogens. And if you analyze the mass spectroscopy of that compound, so mass spectrum will give you idea about the molecular weight of compound. By combining all these spectroscopic technique, that is UV, IR, mass, NMR. So by analyzing a compound by these sequentially for spectroscopy, they will give you whole structure of your whole structure. You can draw the structure of that compound. अगर आपके पास UV का डाटा है, अगर आपके पास इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का डाटा है, NMR का डाटा है और मास का डाटा है, तो आप अननोन कंपाउंड का स्ट्रक्चर फाइंड कर सकते हो. So you can find out the structure of unknown. You can draw the structure of unknown. If you know the UV spectroscopic data, if you know the IR data, if you know the mass spectrum data, if you know the NMR data, so you can draw a structure of unknown compound.
जैसे मान लीजिए कि आपने कोई रिसर्च किया है, इफ सपोज दैट यू हैव सिंथेसाइज्ड अ न्यू कंपाउंड और सपोज दैट यू हैव आइसोलेटेड सम कंपाउंड फ्रॉम नेचुरल ओरिजिन, जैसे आप रिसर्च करते हो आपकी इसमें, तो आपको मालूम नहीं ना कि कंपाउंड कौन सा है, यू हैव टू फाइंड आउट दैट कंपाउंड. सो हाउ यू कैन फाइंड that compound, or you can draw the probable structure of that compound by using this spectroscopic technique. By using UV you will get information about the conjugation present in the compound. In the IR you will get information about the functional group present in the compound. Okay, different kind of functional group. In the NMR you will get idea about the number of different hydrogens, number of different protons. In the carbon magnetic CMR, in the carbon magnetic resonance, you will get idea about the number of different type of carbons present in the compound. By using by doing mass spectroscopy you will get the idea about the molecular weight. So by combining study of these four processes, okay, or these four spectroscopic technique, you will came to know the structure of unknown compound. This is the main importance of this spectroscopic technique. So what is mass? Again I would like to revise the definition. So in this technique, the compound under investigation or compound under analysis is bombarded with a high electron beam of electron, and because of that bombardment, high electron beam will take one electron from that molecule, and molecule will be charged positively. So positive charge, or you can say it is a fragment, it is a broken down. That broken down fragments or charge, that is separated according to their mass to charge ratio under electric field and magnetic field. So very simple. It is a technique in which compound under investigation is bombarded with the high velocity electron. Resultant compound, it may be either organic or inorganic, gets fragmented due to high beam of electron, and fragments or charged particles, they are separated according to their mass to charge ratio in the mass spectroscopy. Okay. Now the charged particle after fragmentation by electron beam, they are separated according to their mass to charge ratio by sequentially deflecting into electric and magnetic field. तो इसमें दो होता है कि आपने फ्रैगमेंट हो गया आपका बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन, नाउ उसको सेपरेट करना है. नाउ यू कैन accelerate or you can deflect that positively charged ions or fragments in the electric field or in the magnetic field. Suppose that only you are deflecting that fragments or positively charged ion only in a one field. अगर आपने सिर्फ magnetic field यूज किया so उसको बोलेंगे सिंगल फोकसिंग मास एनालाइजर. Suppose that you are passing the fragments, you are passing your positively formed ions in a sequentially through electric field as well as magnetic field. अगर दोनों फील्ड यूज किए, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, तो उसमें दोनों में भी एक्सेलरेशन किया, उसका दोनों भी उसका एक मूवमेंट आएगा हमको. ओके, सपोज यू हैव पास्ड योर फ्रैगमेंट्स इन बोथ फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, सो दैट इज नोन एज डबल फोकसिंग. ओके, तो यहाँ पे क्लियर होना चाहिए वो सिंगल फोकसिंग मास एनालाइजर क्या होता है, डबल फोकसिंग मास एनालाइजर्स क्या होता है. सिंगल फोकसिंग मतलब उसमें सिर्फ एक ही फील्ड यूज किया जाता है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड. ओके, सो that is known as single focusing, and that will give you very less resolution. Okay, उसमें resolution कम आएगा आपका. And double focusing means what? So you are using two kind of fields, electric field as well as magnetic field sequentially. So therefore in the double focusing mass analyzer you will get a very good resolution. Okay, and that's why one of the question होता है उसमें कि following mass analyzer is a having highest resolution. So remember double focusing mass analyzers, they have a highest resolution. I will come to that point again in upcoming slides. ये बाद में भी आएगा. but यहाँ पे आपको यहाँ पे दो क्वेश्चंस आते हैं. पहले एक क्वेश्चन आता है मास स्पेक्ट्रम इज ए प्लॉट ऑफ. तो व्हाट इज स्पेक्ट्रम? मास स्पेक्ट्रम क्या होता है कि इंटेंसिटी वर्सेस मास टू चार्ज रेशियो. इंटेंसिटी वर्सेस मास टू चार्ज रेशियो ये बाद में भी आएगा. इट जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट. नाउ कंपोनेंट्स ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर. Mass spectrometer, the instrument which are used to measure the molecular mass of your compound is known as a mass spectrometer. So इसमें क्या क्या कंपोनेंट आएंगे, जैसे यूवी में आता है आपका रेडिएशन सोर्स, मोनोक्रोमेटर्स. ठीक है, रेडिएशन सोर्स, मोनोक्रोमेटर. उसके बाद में आएगा आपका, ठीक है, उसके बाद में आएगा आपका सैम्पलिंग सेल. उसके बाद में आएगा आपका डिटेक्टर्स. ओके, सो दैट वाज द कंपोनेंट ऑफ यूवी. वैसे ही आईआर के भी देखे, वैसे ही एनएमआर के भी देखे. सो लाइकवाइज दैट योर मास स्पेक्ट्रोमीटर आल्सो हैज अ डिफरेंट कंपोनेंट. So first component is nothing but the sample handling system or sample inlet system. Sample handling system और sample inlet system. Sample कैसे, किस तरीके से sample आएंगे? Sample आपके पास बहुत सारे होंगे. So you might have solid, you might have liquid, you might have
ओके गैसेस सॉलिड लिक्विड गैसेस ये तीन स्टेट होते हैं ना सो योर कंपाउंड में बी आइदर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड लिक्विड और you should have you should be able to handle all this sample you should be able to obtain a mass spectra of all kind of sample solid का भी mass spectrum आना चाहिए liquid का भी mass spectrum निकलने आना चाहिए gases का भी आना चाहिए so sample handling system so this part of this mass spectrometer deals with the handling of sample sample कैसा है solid है तो क्या करना है liquid है तो क्या करना है gases है तो क्या करना है okay? So this deals with the sampling handling system it is one of the first part of your mass spectrometer. Now second, the ion source or ionization chamber or ionization techniques. तो ionization technique मतलब क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम यूज करेंगे या फिर कोई केमिकल यूज करेंगे या फिर दूसरा कोई टेक्निक यूज करेंगे टू प्रोड्यूस अ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन जो भी कंपाउंड है आपका सो वट एवर कंपाउंड अंडर इन्वेस्टिगेशन so you have to produce its fragments you have to produce its positively charged ion so for that you need a either electron beam or you need a some reactive gas or you need a some laser beam etc so this is nothing but the ion source or ionization chamber or ionization technique तो दो पार्ट हो गए पहले तो सैंपल हैंडलिंग सिस्टम हो गया तो उसमें आप सॉलिड सैंपल हैंडल कर सकते हो लिक्विड भी यूज कर सकते हो गैसेस सैंपल यूज तो हर एक का सैंपलिंग हैंडलिंग अलग अलग होता है कि सॉलिड का पहले सॉलिड को क्या करो आप so first if you have solid sample you have to vaporize it so you have to convert that solid sample into vapor form and then only you can pass that vapor sample into the ionization chamber and then there will be ionization then there will be deflection acceleration and separation of that charged ions so if you have liquid sample again you have to vaporize it now if you have gas sample then there is no need to vaporize it so because it is already in a gas state so remember here one thing question आता है GPAT में okay so one of the following spectroscopic technique needs a vaporization of your sample or a sample should be in a gaseous form for following spectroscopy technique so your mass spectroscopy needs a gaseous sample your mass spectroscopic needs a vaporization of sample तो सॉलिड है तो उसको वेपराइज करो लिक्विड है तो उसको वेपराइज करो और गैसेस है तो इट्स ओके वो ऑलरेडी वेपर फॉर्म में यहाँ पे ये दो लाइन के ऊपर आपके कम से कम दो या तीन क्वेश्चन मैं आपको बोलूंगा प्रोबेबल क्वेश्चंस ओके सैंपलिंग हैंडलिंग सिस्टम में आपका सैंपल क्या होना चाहिए मास के लिए योर सैंपल शुड बी सॉलिड और योर सैंपल शुड बी इन अ वेपराइज्ड फॉर्म ओके इन अ गैसियस फॉर्म so if you have solid sample you have to convert into gaseous state if you are liquid sample you have to vaporize it okay you have to convert into vapor and if you have gaseous sample then it's okay sample handling system में आता है आपका sample for mass spectrum should be gaseous तो आपका solid है तो उसको गैस में कन्वर्ट करना है आपको हीट करके लिक्विड है तो उसको भी वेपर में कन्वर्ट करना है रिमेंबर फॉर मास स्पेक्ट्रोस्कोपी सैंपल शुड बी इन अ गैसियस स्टेट ओके देन आयन सोर्स आयनाइजेशन चैम्बर एंड आयनाइजेशन टेक्निक तो वहां पे मैंने बोला है कि आपको आयन सोर्स मींस व्हाट सोर्स फॉर इलेक्ट्रॉन ओके देयर में बी आइदर हाई इलेक्ट्रॉन बीम देयर में बी आइदर okay any gas like methane gas reactive gas or any other soft ionization technique like MALDI and others field ionization etc. Now third component of your mass spectrometer is nothing but the electrostatic accelerating system. इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सेलरेटिंग सिस्टम मतलब क्या यहाँ पे क्या रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा सो इलेक्ट्रिक magnetic accelerating system or magnetic field so here you will have magnets component these are the component of your mass spectrometer now after that last component of your mass spectrometer that is the ion separator or mass analyzer so whatever ions are produced because of the ionization and after that that is accelerated in the electric field after that accelerated in the magnetic field and depending upon their mass to charge ratio they are separated and they are analyzed in a mass analyzer or ion separator and after that you will get a particular integrated graph यहाँ पे आपको याद रखना है कि मास एनालाइजर के कितने पार्ट्स होते हैं जैसे यूवी का भी होता है आईआर का भी होता है आपने देखा है likewise that you have different parts of your mass first is nothing but the ion okay? First is nothing but the sample handling system so sample may be either solid liquid or gaseous so remember gaseous state sample is required for your mass spectrometer now after that ion source so in this part there will be ionization of your sample जो भी सैंपल है यहाँ पे क्या होगा उसका आयोनाइजेशन होगा मतलब देयर विल बी प्रोडक्शन ऑफ पॉजिटिव फ्रैगमेंट्स इन दिस पार्ट ओके आफ्टर दैट fragmentation after that fragment
or that positively charged ions will be accelerated in the electric field. There is a electrostatic accelerating system that will be accelerated in the magnetic field. So magnetic field, and after that they will be analyzed. So these are the parts of your mass spectrometer. 1 2 3 4 5. So ये पांच parts होते हैं. So I will show you. Then lastly with the ion collector and vacuum system. Vacuum system भी होना चाहिए because for acceleration system, during the acceleration you need a vacuum. Ion collector and vacuum system, last part. So you can see over here a simple diagram of your mass spectrometer. So first यहाँ पे आपका sample probe रहेगा. So this is known as sample probe. So where sample introduction is there. Okay. So जो भी गैस है sample है आपका, solid है तो solid को convert करो gases में, liquid है तो liquid को convert करो gas में. Now this sample is introduced into a ionization chamber. ये पूरा आपका ये जो part है, so this is known as ionization chamber. Your sample you have to pass into ionization chamber. Now in the ionization chamber, different technique of ionization are there. Suppose that here electric so electron beams. Okay, ये sample जो है आपका उसके ऊपर electron beams, electron high voltage electron around 90 to 100 millivolt. So high voltage electron beam is bombarded on your sample. So what happen over there? So your sample will be converted to positively charged ions, or there will be breaking or bond breaking or breakdown of your compound. So in a different fragments, so your different fragments of your compound will be there. These fragments, they are passed through, they are deflected, they are passed through sequentially in an electric field and magnetic field. पहले इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करेंगे, बाद में मैग्नेटिक फील्ड से पास करेंगे. सो अभी ये जो आयन है, जो फ्रेगमेंट्स बने, जो टूटे, सो दे विल बी डिफ्लेक्टेड थ्रू दिस फील्ड एंड दे विल हैव डिफरेंट पाथ ऑफ मोशन. ठीक है, वो अगर लार्ज मॉलिक्यूलर वेट का आयन है तो वो कम ट्रैवल करेगा, कम मॉलिक्यूलर वेट का आयन है वो जल्दी ट्रैवल करेगा. सो लाइक दैट. ओके, सो दे विल टेक अ डिफरेंट पाथ इन द दिस मैग्नेटिक सिस्टम. फॉर एग्जांपल आयन विच आर टू लाइट, मतलब जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम है, सो आयन विच आर टू लाइट बेंट टू मच, जो कर्वेचर पाथ ऑफ कर्वेचर है वो, जो अगर सपोज इफ योर one ion from your molecule is having very less molecular mass, so it will be bent, so it will have a path of curvature. इसीलिए तो मुझे दिक्कत होता है कि यार टाइम दिया है बच्चों को तो वो टाइम पे नहीं आते. So depending upon the molecular mass of that ion, they will be separated. So if one ion is having less molecular weight, so it will come to detector in a very small period or very small time. वो जल्दी आ जाएगा. So ions which are too light, मतलब which ions which are having less molecular weight, ions which are having less molecular weight, so they will bend too much in the magnetic field. तो ये जल्दी path of curvature लेगा और जल्दी निकल आएगा वहां से. So those ions which are having large molecular weight, so they will bend too little. वो जल्दी bend नहीं होंगे, जल्दी यहाँ से डिफ्लेक्ट नहीं होंगे, वो टाइम लेंगे. तो पहले लेस molecular weight वाला जो आयन है वो जल्दी से यहाँ से बाहर आ जाएगा, यहाँ पे डिटेक्ट हो जाएगा. For their acceleration, you need a vacuum and all that. So vacuum pump is also there. In this part, your sample is ionized. So ionization, okay, ionization. So ionization chamber, like ion source, जो भी filament heated, and that will give you electrons of 90 to 100 milli electron volt. That will be bombarded on sample. Okay. Now this is known as a magnetic field. जैसे ये इट इज अ काइंड ऑफ सिंगल फोकसिंग मास एनालाइजर. ये क्या है, सिंगल फोकसिंग है क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड यूज किया है टू डिफ्लेक्ट द आयंस. ओके, सो टू अंडरस्टैंड, जस्ट टू अंडरस्टैंड द concept. Okay, now because of that, if low molecular weight having ion is there, so it will be curved, it will take curvature, path of curvature will be high, and it will be its time to reach the detector will be less. So in the flight tube it will reach to a detector in a very short period. But any ion which is having high molecular weight, so it will take long time, it will be curved late, and it will take long time to reach the detector. Only ions of right mass can enter into detector. Now you will get a recorded spectra of mass. Okay, so there is a detection. So it is a simple schematic diagram for your mass spectrum. तो ये सिंगल फोकसिंग मास स्पेक्ट्रोमीटर है क्योंकि इसमें एक ही फील्ड यूज किया है.
डबल फोकसिंग में क्या रहेगा, इन द डबल फोकसिंग मास स्पेक्ट्रोमीटर देयर विल बी टू फील्ड्स. फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे डबल फोकसिंग में क्या रहेगा, व्हेन देयर विल बी आयोनाइजेशन ऑफ योर सैंपल. सो यहाँ पे एक कंपोनेंट आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड. सो आफ्टर आयोनाइजेशन योर सैंपल विल बी डिफ्लेक्टेड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड and magnetic field sequentially. So that is nothing but the double focusing mass analysis. If single focusing, that means only single field. एक तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करेंगे या फिर मैग्नेटिक फील्ड, कोई भी एक, दैट मीन्स सिंगल फोकसिंग. और दोनों भी यूज करेंगे तो उसको बोलेंगे डबल फोकसिंग. एंड डबल फोकसिंग मास एनालिसिस दे विल गिव यू हाईएस्ट रिजोल्यूशन. क्वेश्चन जीपैट में आ चुका है. नाउ पार्ट्स ऑफ योर मास स्पेक्ट्रोमीटर. पार्ट्स ऑफ योर मास स्पेक्ट्रोमीटर. फर्स्ट इज सैंपलिंग हैंडलिंग, सैंपल हैंडलिंग सिस्टम. सैंपल मस्ट बी इन अ वेपराइज्ड फॉर्म. क्या है, सैंपल मस्ट बी इन अ वेपराइज्ड फॉर्म. क्वेश्चन आ चुका है. फॉर मास स्पेक्ट्रोमेट्री योर सैंपल शुड बी वेपराइज्ड फॉर्म. तो अगर आपके पास सॉलिड है तो उसको वेपराइज में कन्वर्ट करो, लिक्विड है तो उसको वेपराइज करो. सो सैंपल शुड बी इन अ वेपराइज्ड फॉर्म फॉर मास एनालिसिस. सो सैंपल इज कन्वर्टेड इनटू वेपर्स and introduced into inlet system by using vapor system. कैसे करेंगे, by using heat. So sample is converted to vapors in the sample inlet system by using heat. Now rate of sample introduction into vaporization chamber. Rate of sample introduction into vaporization chamber must remain constant. So you have to control that rate of sample introduction to vaporization chamber for better result. So for better result, this pressure is used 50 to यहाँ पे 30 to 50 torr pressure is used for better result. Rate of sample introduction into vaporization chamber should be constant for better result. 30 to 50 torr pressure is used. Now ionization chamber. Second part is ionization chamber. Here a beam of electron is bombarded on a sample so that sample will get ionized. Electron beam accelerated by high voltage. Okay. So 190 to 100 electron volt beam is used. This collision between electrons and your molecule will produce a different fragments. Will produce a different fragments. ठीक है, यहाँ पे molecule का एक थोड़ा सा टूट जाएगा, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा एक छोटे छोटे pieces में टूट जाएगा. Which this now these fragments differs in their molecular weight. एक छोटा fragment है उसका molecular weight कम रहेगा, एक बड़ा fragment है उसका molecular weight ज़्यादा रहेगा. So these fragments differ in the molecular weight and okay, the fragments will carry a definite positive charge. ये fragment के ऊपर क्या होगा, positive charge होगा. क्यों, because वहाँ से electron निकल गया है. So the electron from your molecule has been knocked out by high velocity electron beam. जब आप इलेक्ट्रॉन बीम पास करते हो कंपाउंड के ऊपर तो उसमें का एक इलेक्ट्रॉन पहले निकल जाता है. अगर वही इंटेंसिटी ज्यादा है उसका तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तीसरा लाइकवाइज दैट. ओके, सो m प्लस m प्लस प्लस m प्लस 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 लाइक दैट. सो अगर एक इलेक्ट्रॉन निकले तो उसको बोलेंगे m प्लस. अगर दो इलेक्ट्रॉन निकले तो उसको बोलेंगे m प्लस 2 आयन, like that. These ions will have definitely positive charge and move through instrument as a sample charge molecule. Now there is a possibility of one more possibility. कि अगर जैसे आयोनाइजेशन हो गया, ब्रेकिंग हुआ है मॉलिक्यूल का, डिफरेंट आयंस बन गए, तो अभी ये फिर से रिजॉइन भी हो सकते हैं बिकॉज दे आर अ केमिकल एंटिटी, दे कैन रिजॉइन. ओके, द रिकॉम्बिनेशन ऑफ फ्रैगमेंट्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय मेंटेनिंग द सिस्टम एट अ लो प्रेशर. दैट्स व्हाई लो प्रेशर यूज कर रहे हैं आपको सिस्टम में, सो दैट देयर विल बी नो रीजॉइनिंग और रिकॉम्बिनेशन ऑफ दैट फ्रैगमेंटेड आयन. जो भी कंपाउंड के फ्रैगमेंट्स बने टूटे वो ज्वाइन भी तो हो सकते हैं ना बाद में. To prevent that rejoining, to prevent that recombination of fragments or ions, so you have to maintain the system at a low pressure. Okay, so by maintaining the system at a low pressure you can prevent the rejoining of fragmented ions. तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि after fragmentation fragments may be rejoined. How you can prevent that? You can prevent by maintaining the system at a low pressure. There are different types of ionization technique. अभी ionization करने के लिए बहुत सारे टेक्निक है. There are different techniques for ionization. We will discuss it in upcoming slides. Now third component होता है आपका mass spectrum का electrostatic accelerating system. So the positive ions formed in the ionization chamber are withdrawn by electric field which exists a strong electric field of 400 to 4000 volt and they accelerate these particles and separate them according to their velocities. अभी velocity किसके ऊपर डिपेंड है, मास के ऊपर है. मास into acceleration is the velocity.
So they are separated according to their mass. So electric field. Now next one is a magnetic field. So acceleration of particle from electric field, accelerated accelerated particles from electric field enters into the magnetic field and requires, okay, magnetic field required to move these particles in a curved path. Okay, magnetic deflector mass spectrometer. Okay, so radius of curvature वो वहाँ पे जो curve लेते हैं, so radius of curvature depends on the molecular weight of that ion. तो वही ना, जो जिसका molecular weight कम होगा वो जल्दी curvature लेगा, radius of curvature will be very less, and if those ions which are having molecular weight higher, so it will take a longer time to curve. So radius of curvature will be very high for mass having more molecular weight ion. Okay, so in the magnetic field also they are separated according to their mass to charge ratio, and after that they are detected in the detectors. Now ion separator or mass analyzers, ये आयन सेपरेटर और मास आयन, तो आपने क्या किया पहले कि जो भी सैंपल है उसके आयंस बनाए, मतलब फ्रैगमेंट्स बनाए, टूटे टुकड़े बनाए उस कंपाउंड के, वो टुकड़े आपने क्या किया, घुमाया उसको, मतलब उसको एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड में गए वो, उसके बाद में मैग्नेटिक फील्ड में गए, तो जिनका जो ज्यादा मास है वो थोड़ा सा लेट आएंगे, जिनका जो ज्यादा मास है वो जल्दी निकल के आएंगे। आयन सेपरेटर और आयन एनालाइजर, लास्ट में उसको मेजर भी करना है कौन सा है कौन सा नहीं। So the part which separate the ions according to their masses is nothing but the mass analyzer. Ideally it should have high resolution, मतलब अगर कोई दो फ्रैगमेंट का molecular weight just 0.005 से भी different है, so that should be analyzed by mass analyzer. Okay, so it should have high resolution. Example, it should distinguish between the molecular weight of 246.1620 and 246.1984. अब ये तो यहाँ पे दो molecular weight है, suppose that your fragments are having these two fragments are there, so एक का molecular weight है ये और दूसरे का molecular weight है 246.1984. So if your mass analyzer is able to separate these weights, कि दोनों का भी weight कितना है 246.1620 एक का है और दूसरे का कितना है 246.1984, देखो कितना है, मतलब 0.03 है ना, उसका डिफरेंस है। So if your mass spectrum is analyzed, if your mass analyzer is able to separate this weight, that means it is having a higher resolution and must have a high rate of transmission of ion. Okay, types of ion separator will be discussed in the separate. We will see specific introduction. We will separate this, discuss it separately. There are two types of mass analyzer: single focusing and double focusing. Double focusing will give you best resolution. There are also again time of flight is there. Then quadruple mass analyzer is there. There are a lot of mass analyzers. We are going to discuss in the now vacuum system. So vacuum in the mass spectrum is generally maintained at a 0.05 torr. Question as it is इसके ऊपर आ चुका है. Vacuum in the mass spectrometer is maintained at a 10 raised to minus 5 torr of the ion source, and other system 0.05 0.015 torr. तो सिस्टम का जो वैक्यूम है वो कितना रहना चाहिए 0.015 torr, उतना प्रेशर रहना चाहिए. सो ये क्वेश्चन आ चुका है जी. Now different types of ionization technique. तो how you can produce your positive ion from your compound, जो भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका पॉजिटिव आयन कैसे बनाएंगे या फिर उसको टूटी का कैसे होगा. देयर आर डिफरेंट वे, देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स फॉर आयोनाइजेशन. तो इसके ऊपर क्वेश्चन आता है. तो पहला आयोनाइजेशन टेक्निक है आपका इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट. हियर इलेक्ट्रॉन बीम इज bombarded on a sample so that sample will get ionized. Okay, now electron beam accelerated by voltage of 100 volt. Okay, electron volt EV 90 to 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इलेक्ट्रॉन बीम पास किया जाता है सैंपल की. नाउ दिस कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड मॉलिक्यूल विल रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट फ्रैगमेंट्स ऑफ द मॉलिक्यूल which are having different molecular weight. जितने फ्रैगमेंट बनेंगे हर एक फ्रैगमेंट का मोलिकुलर वेट अलग होगा या फिर कुछ का सेम भी हो सकता है, बट सेम अगर होगा तो वो सेम ही आएंगे ना. सो इनमें देर आर, उसके बाद में देर आर टू टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर. वे सिंगल फोकसिंग होता है, डबल फोकसिंग होता है. इन द सिंगल फोकसिंग पॉजिटिव फ्रैगमेंट्स डिफ्लेक्टेड इन द ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड.
सिंगल फोकसिंग में क्या होगा, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड ही यूज किया जाता है टू सेपरेट द आयंस. सिंगल फोकसिंग. डबल फोकसिंग, it will give you highest resolution and positive fragments sequentially separated or deflected in electric field as well and magnetic field respectively. तो डबल फोकसिंग में क्या है कि पहले जो भी आपका आयंस बना है उसको पहले इलेक्ट्रिक फील्ड से एक्सेलरेट करो, उसमें सेपरेट हो जाएगा वो. उसके बाद में सिक्वेंशियली उसको मैग्नेटिक फील्ड में भी एक्सेलरेट करो, उसमें भी वो सेपरेट हो जाएगा. सो दैट्स व्हाई दिस डबल फोकसिंग विल गिव यू हाईएस्ट रेजोल्यूशन. क्वेश्चन आ चुका है जीपैट में, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मास स्पेक्ट्रोमीटर विल गिव यू हाईएस्ट रेजोल्यूशन. रिमेंबर, हाईएस्ट रेजोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डबल फोकसिंग मास एनालाइजर. सिंगल फोकसिंग में सिर्फ एक ही फील्ड यूज करते हैं फॉर द सेपरेशन ऑफ आयंस. तो पहले इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट की वजह से क्या होगा, आपका जो कंपाउंड है उसका डिफरेंट डिफरेंट फ्रैगमेंट्स बनेगा, आयंस बनेगा, एंड दैट इज यू हैव टू सेपरेट दैट आयन according to their molecular weight and then you have to analyze. Okay, so तो ये इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट उसका फ्रैगमेंट बनेगा. वो फ्रैगमेंट क्या करेंगे, आप एक्सेलरेट करेंगे, उसको मूव करेंगे. मूव इन, यू हैव टू मूव इन दैट electric field. Suppose that you are only using electric field, that means your spectrometer is a single focusing. You are going to get less resolution. Now, if you are deflecting or accelerating that accelerating that ions or fragments in the electric field as well as magnetic field sequentially, that means you are using double focusing mass analyzer, which will give you highest resolution. क्वेश्चन आ चुका है. आयोनाइजेशन के लिए भी बहुत सारे ये होते हैं कि ये है Knudsen cell, ये होता है Knudsen cell. So Knudsen cell employs a thermal and electron bombardment. This is used for thermodynamic studies, for spatial analysis of solid and also for low vapor pressure liquids. एक Knudsen cell जो होता है, it is a ये मतलब ये सेल होता है कि इसमें आयोनाइजेशन के लिए ये सेल होता है. So Knudsen cell employs thermal and electron bombardment. Okay, excitation. This is used for thermodynamic studies and for spatial analysis of solid and low vapor pressure liquids. The cell is heated either by radiation or by electron bombardment to attain a temperature continuously and adjustable from ambient temperature to 2500 degree Celsius. तो ये Knudsen cell जो होता है वो पहले सैंपल को हीट करने के लिए तो उसको वेपराइजेशन होगा और बाद में उसको इलेक्ट्रॉन बीम इम्पैक्ट होगा. सो आयनाइजेशन सेल है पर्टिकुलरली, इट इज अ काइंड ऑफ आयनाइजेशन सेल फॉर लो वेपर प्रेशर liquids and solid sample. Okay, electron impact, then Knudsen cell, then surface ionization. Solid sample is subjected to a mass spectrometer. Now this solid sample is coated with a ribbon filament which is heated at a 2000 degrees Celsius. There are chances that positive ions may be formed instead of neutral molecule. Now this method is superior because there is no ionization of the background gases or background gases in the mass spectrometer. तो इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट में क्या होता है कि बाय चांस अगर आपके सैंपल के साथ में अगर आपका एयर भी गया तो होता है नॉर्मली, तो एयर में जो गैसेस है उनका भी आयनाइजेशन होता है. सो वो दैट विल एक्ट एज अ कंटेमिनेंट इन योर सिस्टम, दैट विल एक्ट एज अ impurity in your spectrum. Okay, now surface ionization क्या होता है कि solid sample which is subjected to a mass spectrometer is coated with the ribbon filament and heated, and then because of that heat, so that molecule will be converted to positive ions. Okay, and here one more advantage is that there will be no ionization of background gases in the. Now another source is there, spark ionization source. Spark source of ionization. So in this method, inorganic. Okay, remember ये जो है spark ionization method, it is particularly for inorganic compounds. So in this method, inorganic substances to be analyzed, they are formed into two electrodes held on a small movable wire. So 100 kilovolt potential is applied and discharge is initiated. The positive ions are formed, okay, which are produced and evaporated. Detection sensitivity is too high with one of the advantage. That is one of the advantage कि spark source of ionization. Remember यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि spark source of ionization is most commonly used for
इनऑर्गेनिक, यहाँ पे इनऑर्गेनिक याद रखो, इनऑर्गेनिक, ओके, इनऑर्गेनिक सैंपल्स। सो स्पार्क सोर्स ऑफ आयोनाइजेशन इज फॉर इनऑर्गेनिक सैंपल्स। इसमें भी सेम मेथड है कि यहाँ पे भी उसका आयोनाइजेशन होगा। सो इलेक्ट्रॉन्स ही उसके ऊपर बम्बार्ड करना है 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का पोटेंशियल लगा के। बाकी ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। इफ यू वांट टू रीड यू कैन रीड फ्रॉम बुक्स। सो बहुत सारा इंफॉर्मेशन है उसका। नाउ केमिकल आयोनाइजेशन, सो वट एवर आयोनाइजेशन टेक्निक वी हैव सीन अंटिल, इन दैट आयोनाइजेशन टेक्निक some kind of electron beam was used। टेक में इलेक्ट्रॉन बीम आता है। केमिकल आयोनाइजेशन में क्या है कि यहाँ पे केमिकल यूज करना है, कौन सा? सो इट इज नोन एज गैसियस आयोनाइजेशन और केमिकल आयोनाइजेशन रिमूवल। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है, which gas is used in the chemical ionization? So methane is the most commonly gas used in the chemical ionization. So methane gas in a chamber, okay, then beam of electron is passed। so इसमें का एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, मीथेन क्या बनेगा? रिएक्टिव रेडिकल बनेगा। so if one electron is removed from methane, so what will happen? So methane will be reactive radical। so the reaction of gas, that is methane, undergo ionization to produce ions। ये अभी ये रिएक्टिव मीथेन आपके कंपाउंड के साथ में रिएक्ट होगा और आयोनाइजेशन बनेगा। नाउ रिएक्शन ऑफ गैस, दैट इज मीथेन विद सैंपल, अंडरगोज टू प्रोड्यूस द आयंस which react with the neutral molecule to produce a product of positive ions। अभी ये जो मीथेन गैस है उसका इलेक्ट्रॉन रिमूव करो, अभी वो जो बचा है वो रिएक्टिव मीथेन रेडिकल बनेगा। वो रेडिकल आपके कंपाउंड के साथ में रिएक्ट होगा एंड दैट विल प्रोड्यूस अ पॉजिटिव आयन। Because of that, this is known as a chemical ionization। So methane gas is most commonly used in the chemical ionization। तो ionization टेक्निक बहुत सारे हैं, जैसे आपने देखा है इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट, सरफेस आयोनाइजेशन, स्पार्क आयोनाइजेशन, ठीक है, नोट्स एंड सेल। आउट ऑफ दैट दिस आयोनाइजेशन टेक्निक वाज अ इलेक्ट्रॉन बीम, इसमें सब में इलेक्ट्रॉन बीम यूज किया जाता है। अभी एक केमिकल आयोनाइजेशन टेक्निक जो है इसमें केमिकल गैस यूज किया जाता है, दैट इज अ मीथेन गैस। So first electron is removed from methane gas। Now that methane radical is reactive, that will react with the your sample and will produce a positive ions। Okay, बाद में का प्रोसेस सेम रहेगा, डिफ्लेक्शन होगा। केमिकल आयोनाइजेशन याद रखो, क्वेश्चन आ चुका है। Now next one is nothing but the fast atom bombardment। So again it is a technique for ionization to convert your molecule into positive ion। So next technique is a fast atom bombardment। It is known as FAB। A high energy beam neutral atoms like deuterium, then this argonium, strike with the solid, causing desorption and ionization, mostly used for biological molecules। then large molecular ions or and less fragmentation। this is a disadvantage। तो ये बायोलॉजिकल सैंपल जो है, जैसे प्रोटीन सैंपल है या फिर कोई एंजाइम है, ठीक है, उसके लिए मोस्टली यूज किया जाता है। A high energy beam of neutral atoms like deuterium, okay, then argon gas, argon atom, they strikes with the solid sample, causing desorption and ionization। And this technique is mostly used for the biological molecule। Question आ चुका है, one of the following technique is most commonly used for the ionization of biological molecules। fast atom bombardment। उसका ही सब टाइप होता है मैट्रिक्स असिस्टेड लेसर डिसॉर्प्शन टेक्निक, MALDI, matrix assisted laser desorption technique। so it is a kind of ionization technique। इसमें लेजर बीम यूज करते हैं, इतना याद रखो। so matrix assisted laser desorption technique। so there is use of laser beam for ionization of biological molecules। so ये याद रखो। now again electro spray ionization, इसके ऊपर भी बहुत सारा होता है, बट आई डोंट थिंक आपके जीपेट के लिए इतना बहुत सारा, इसमें माल्डी के ऊपर ही एक सेशन हो सकता है कि माल्डी में मैट्रिक असिस्टेड लेजर डिसॉर्प्शन टेक्निक। अगेन होता है नेक्स्ट सेवन टेक्निक ऑफ आयोनाइजेशन, दैट इज इलेक्ट्रो स्प्रे आयोनाइजेशन। solution of sample is sprayed across the high potential difference through a needle in a interface। मतलब क्या है, यहाँ पे जो आपका सैंपल है वो आपको स्प्रे करना है इसमें एक चेंबर में जहाँ पे दो इलेक्ट्रोड लगे हैं और उसमें हाई पोटेंशियल डिफरेंस है। सो इलेक्ट्रोड्स हैविंग हाई पोटेंशियल डिफरेंस, so you have to spray your sample in that zone so that when your sample will come across that zone, there will be production of multiple ions। कि पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है तो जैसे ही सैंपल वहां पे आएगा वो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। सो दैट इज अ इलेक्ट्रो स्प्रे आयोनाइजेशन। देखो आयोनाइजेशन टेक्निक खत्म हो गया। नाउ यू कैन सी mass spectrum will look like this। what is a mass spectrum? it is a graph of relative abundance or intensity
ऑफ आयंस टू द मास टू चार्ज रेशो। तो ये क्या है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है। व्हाट इज मास स्पेक्ट्रम? So it is nothing but the spectrum of relative intensity or relative abundance to the mass to charge ratio of fragment। तो क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुका है, व्हाट इज मास स्पेक्ट्रम। सिंपल होता है, आपको उस टाइम पे याद नहीं रहता है। जैसे आपका यूवी में क्या आता है, एब्जॉर्बेंस, वहां पे आएगा वाई एक्सिस पे एब्जॉर्बेंस, और एक्स एक्सिस पे क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस एब्जॉर्बेंस, तो वो यूवी में आता है। आईआर में क्या आता है, आईआर में आता है वेव नंबर, वाई एक्सिस पे आता है आपका, और नीचे क्या आएगा, सो लाइक दैट। इन एनएमआर आल्सो, एनएमआर में क्या आता है कि पीएम डेल्टा स्केल के ऊपर ग्राफ आएगा आपका। So you should know which kind of graph is there in which kind of spectroscopy. Question उसके ऊपर आता है. So mass spectrum is nothing but the it is a plot of relative abundance or relative intensity of ions to the mass to charge ratio. तो ये important याद रखो। x axis पे आएगा mass to charge ratio, y axis पे आएगा relative abundance और intensity। डिफरेंट मास और डिफरेंट आयन, ओके। ये मास स्पेक्ट्रम के ऊपर कौन से आयन मिलेंगे आपको, ओके। तो डिफरेंट फ्रैगमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल प्रोड्यूस्ड ड्यू टू आयनाइजेशन। आयनाइजेशन का हो चुका है जो आयनाइजेशन टेक्निक, बिकॉज ऑफ दैट यू आर गेटिंग डिफरेंट फ्रैगमेंट्स ऑफ योर मॉलिक्यूल। तो वो कौन से फ्रैगमेंट है जो डिटेक्ट होगी। फर्स्ट, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, फर्स्ट पिक इन द मास स्पेक्ट्रम। पहला जो पिक आता है मास स्पेक्ट्रम में वो क्या होता है। सो फर्स्ट पिक इन द मास स्पेक्ट्रम इज नथिंग बट द मॉलिक्यूलर आयन पिक। याद रखो, फर्स्ट पिक इन द मास स्पेक्ट्रम इज नथिंग बट द मॉलिक्यूलर आयन पिक एंड दैट विल गिव यू इंफॉर्मेशन अबाउट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड। तो ये क्या है, जब पहला इलेक्ट्रॉन जब आपके कंपाउंड से रिमूव होता है तो पॉजिटिवली चार्ज आयन जो बनता है पहला, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ योर कंपाउंड। So whatever positive ion produced after removing of one electron from your compound, first positively charged ion, that molecular weight of that ion correspond to molecular weight of your molecular ion peak in the mass spectrum will give you information about the molecular weight of your compound. And remember, first peak in the mass spectrum is nothing but the molecular ion peak. पहला peak कौन सा होता है, molecular ion peak होता है, और उसका molecular weight क्या है, आपका कंपाउंड का molecular weight होता है। Because molecular ion peak is nothing but it is because of the just removal of one electron from your compound। तो जो कंपाउंड है आपका स्ट्रक्चर, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है, बाकी जो स्ट्रक्चर है वो इंटैक्ट है, एंड उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वही आपके कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट है। सो मॉलिक्यूलर आयन पिक विल गिव यू इंफॉर्मेशन अबाउट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड, ओके। फर्स्ट पिक इन द मास स्पेक्ट्रम इज मॉलिक्यूलर आयन पिक। आप बोलेंगे सर यहाँ पे कुछ लिखा है, ये वाला फर्स्ट पिक है, दिस इज नॉट अ फर्स्ट पिक, ये बाद में बोलता हूँ आपको। दिस 98 means the intensity, okay, 98 means it is a molecular weight of your compound. So molecular ion peak will give you information of molecular weight. Now molecular ion peak is the first peak in the mass spectrum. Remember, molecular ion peak is also known as parent ion peak. Molecular ion peak is also known as parent ion peak, remember, okay। Now after that another peak known as a base peak। ये एक दूसरा peak होता है base peak। तो बेस पीक क्या होता है, रिमेंबर क्वेश्चन आ चुका है, द मोस्ट इंटेंस पीक इन द मास स्पेक्ट्रम। मोस्ट इंटेंस पीक इन द मास स्पेक्ट्रम, तो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी जो पीक का है मास स्पेक्ट्रम में, तो उसको क्या बोलेंगे। सो मोस्ट इंटेंस पीक इन द मास स्पेक्ट्रम, दैट इज अ बेस पीक। 3 बार क्वेश्चन आ चुका है जीपैट में। रिमेंबर, मोस्ट इंटेंस पीक इन द मास स्पेक्ट्रम इज अ बेस पीक। इसका इंटेंसिटी बहुत ज्यादा रहता है बाकी के कंपैरिजन में। क्यों रहता है ज्यादा, उसके पीछे भी रीजन है। जैसे मान लीजिए कि आपके कंपाउंड है, जैसे मान लीजिए टोलिन। टोलिन मतलब क्या, बेंजीन रिंग एंड मिथाइल ग्रुप, ठीक है। तो अभी इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन इंपैक्ट आ जाएगा तो ये टूटेगा स्ट्रक्चर, ठीक है। सबसे पहले कहाँ से टूटेगा, जो मिथाइल ग्रुप है वो निकल जाएगा, वो वहां से टूटेगा। तो उसका एक 15 इंटेंसिटी वाला एक पीक आएगा, उसका मोलेकुलर वेट कितना है 15। तो 15 वाला एक पीक आएगा। अभी बचा क्या है, बेंजीन। तो बेंजीन में क्या है कि वो एरोमेटिक है, तो वो जल्दी टूटेगा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होता है, डीलोकलाइजेशन होता है उसमें, स्टेबल होता है वो ज्यादा। सो वो जल्दी टूटेगा नहीं बिकॉज ऑफ इट्स रेजिस्टेंस। सो इट्स इंटेंसिटी इज हाई। और एक क्वेश्चन आ सकता है आपको यहाँ पे कि द मोस्ट रेजिस्टेंट फ्रैगमेंट इन योर कंपाउंड विल गिव यू व्हिच काइंड ऑफ पिक। द मोस्ट रेजिस्टेंट फ्रैगमेंट इन योर कंपाउंड विल गिव यू बेस पिक, क्योंकि बेस पिक जल्दी टूटेगा नहीं। वो क्या है कि दैट इंडिकेट, बेस पिक इंडिकेट द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर इन योर कंपाउंड।
जो जब सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होता है कंपाउंड में वो क्या देता है, बेस पिक देता है। तो इतना मैं यहाँ पे ज्यादा क्यों एम्फोसिस कर रहा हूँ, व्हाई आई एम गिविंग मोर एम्फोसिस ऑन दिस, बिकॉज इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं। व्हाट डू यू मीन बाय बेस पिक, व्हाट इज मॉलिक्यूलर आयन पिक? ओके, फर्स्ट पिक इन द मास स्पेक्ट्रम इज अ मॉलिक्यूलर आयन पिक। ओके, याद रखो, फर्स्ट पिक in the molecular in the mass spectrum is the base, is nothing but the molecular ion peak, and which will give information about the molecular of your compound. Molecular ion peak मतलब mass of your compound, and that is also known as a parent ion peak. Molecular ion peak is also known as parent ion peak. Now base peak क्या होता है? Base peak, okay, base peak is nothing but the most intense peak in the mass spectrum, जिसका इंटेंसिटी सबसे, देखो आप यहाँ पे जितने पीक है सबसे ज्यादा इंटेंसिटी किसका है, उसको बोलेंगे मोस्ट इंटेंस पीक इज नथिंग बट द बेस पीक, एंड दैट इज नथिंग बट द, इट इंडिकेट्स द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर इन द कंपाउंड। जो ऐसा एक फ्रैगमेंट रहेगा कि वो टूटेगा नहीं जल्दी, वो क्या करेगा, बेस पीक देगा। उसके बाद में दीज पिक्स, ओके, उसके बाद में जो ये पिक्स है बाकी, दीज पिक्स आर नोन एज अ रीअरेंजमेंट आयन पिक्स। ये क्या, इसको क्या बोलेंगे, फ्रैगमेंटेशन आयन पिक्स। ओके सॉरी, फ्रैगमेंटेशन आयन पिक्स, इसको बोलेंगे फ्रैगमेंटेशन आयन पिक्स। सो पहला पिक होता है आपका मॉलिक्यूलर आयन पिक, जो आपको मॉलिक्यूलर वेट का इंफॉर्मेशन देता है कंपाउंड का। सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन निकल के जो बाकी जो स्ट्रक्चर बचता है वो क्या है, मॉलिक्यूलर वेट है कंपाउंड का। दैट इज दैट पिक इज नथिंग बट द मॉलिक्यूलर आयन पिक नोन एज अ पैरेंट आयन पिक। अभी मोस्ट इंटेंस पिक इन द मास स्पेक्ट्रम इज अ बेस पिक, क्वेश्चन आ चुका है। दैट विल गिव यू मोस्ट स्टेबल, दैट विल गिव यू, दैट इंडिकेट यू मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर इन द कंपाउंड। नाउ बाकी जो पिक है उसको बोलेंगे फ्रैगमेंटेशन आयन पिक। ये सब तीनों बाकी सब फ्रैगमेंटेशन आयन पिक, और उसको एक और एक टर्म है, सो दिस फ्रैगमेंटेशन आयन पिक इज आल्सो नोन एज अ डॉटर आयन पिक्स। डॉटर आयन पिक्स, तो जो मॉलिक्यूलर आयन पिक है उसको पेरेंट आयन पिक बोलते हैं, और जो फ्रैगमेंटेशन पिक्स है उसको बोलते हैं डॉटर आयन पिक्स। ये हो गया। अभी इसमें और एक पिक आता है आपका, ये जो बोल रहे हैं मॉलिक्यूलर आयन आइसोटोप पिक। सो मॉलिक्यूलर आयन पिक विल गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड। अभी ये मॉलिक्यूलर आयन आइसोटोप पिक क्या इंफॉर्मेशन है, सो दिस इंडिकेट द आइसोटोपिक अबंडेंस। ठीक है, जैसे होता है कि कार्बन 12 है, कार्बन 13 का भी अबंडेंस होता है, कार्बन 13 का अबंडेंस। सो इफ कार्बन 13 is present in your structure, so that will give you very small intensity peak। बहुत कम इंटेंसिटी वाला पिक आएगा आपको मोलिकुलर आयन पिक के पहले। So if you are getting very small peak or very less intensity peak before the molecular ion peak, so that peak is known as a molecular ion isotopic peak। जैसे क्लोरीन में आता है, हाइड्रोजन्स में आता है, ये नाइट्रोजन में आता है, फॉस्फोरस में आता है, ठीक है, और कार्बन में भी आता है। सो दिस इज नोन एज अ आइसोटोपिक अबंडेंस पीक। तो याद रखो, ये सिंपल ग्राफ है, इसके ऊपर 2-3 बार क्वेश्चन पूछा है, तो आपको कि कौन से पीक आता है किसमें, एक और एक बार बोलता हूँ। So सबसे पहला, the first peak in the mass spectrum is nothing but the molecular ion peak. First peak in the mass spectrum is known as a molecular ion peak. This molecular ion peak will give you information about the molecular weight of compound, and this peak is also known as a parent ion peak. Most intense peak in the mass spectrum is known as a base peak. Most intense peak in the mass spectrum is known as a base peak. So its intensity will be highest amongst the other peaks, because base peak will indicate the structure of your compound, such fragment, that fragment is the most stable। तो आपके स्ट्रक्चर में कोई एक फ्रैगमेंट होगा जो जल्दी टूटेगा नहीं, दैट इज अ स्टेबल। सो बेस पिक विल इंडिकेट द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर इन द कंपाउंड, याद रखो इसको। बाकी जो है पिक्स, दे आर नोन एज अ फ्रैगमेंटेशन आयन पिक्स, फ्रैगमेंटेशन आयन पिक्स। ओके, एंड इफ दैट फ्रैगमेंटेशन आयन पिक्स इज बिकॉज ऑफ द रीअरेंजमेंट इन द मॉलिक्यूल, अगर किसी में रीअरेंजमेंट हो गया है, जैसे जैसे होता है कि अल्फा हाइड्रोजन, जिसमें कीटोन कीटोन एंड अल्फा हाइड्रोजन, तो उसमें क्या होता है कि रीअरेंजमेंट होता है। इफ देयर इज अ रीअरेंजमेंट ऑफ दिस फ्रैगमेंटेशन आयन पिक, एंड द रिजल्टेंट पिक इज नोन एज अ रीअरेंजमेंट आयन पिक। अगर जो फ्रैगमेंटेशन आयन पिक से बाकी, या फिर डॉटर आयन पिक से, इसको डॉटर आयन भी बोलते हैं। सो इफ देयर इज अ न्यू पिक व्हिच इज ड्यू टू द रीअरेंजमेंट अमंग्स दीज पिक्स, ये फ्रैगमेंटेशन आयन पिक्स और डॉटर आयन पिक्स के आप उनमें खुद में ही कोई रीअरेंजमेंट होके एक नया पिक बना, तो उसको बोलेंगे रीअरेंजमेंट आयन पिक। ओके, नाउ these are the four। now fifth peak is nothing but the molecular ion isotope, और आइसोटोपिक पिक बोलेंगे, जल्दी सिंपल बोलेंगे आइसोटोपिक पिक। so if you are getting a peak before the molecular ion peak and whose intensity is very less,
जो पहला पिक आएगा मॉलिक्यूलर आयन पिक होगा, इसके पहले भी एक पिक अगर आ गया, ये हमेशा आता है ऐसा नहीं है, ये मॉलिक्यूलर आयन आइसोटोप पिक हर टाइम पे आएगा ऐसा नहीं। अगर उसमें आइसोटोपिक अबंडेंस होगा तो आइसोटोपिक होगा तो ही आएगा वो। सो इफ यू आर गेटिंग पिक बिफोर द मॉलिक्यूलर आयन पिक एंड हुज इंटेंसिटी इज लेस, क्वेश्चन आ सकता है आपको, 100% आएगा। सो दैट इज नोन एज अ मॉलिक्यूलर आयन आइसोटोपिक पिक और आइसोटोपिक पिक सिंपली। आइसोटोपिक पिक कब आता है, मॉलिक्यूलर आयन के पहले आता है, उसका इंटेंसिटी बहुत कम होता है। देखो आप कितना छोटा पिक है, वो इंटेंसिटी बहुत कम है उसका, सो एज कम्पेयर टू मॉलिक्यूलर आयन पिक, सो दैट